multiply numerator and denominator by 2. Okay, so 5 into 2 10, 2 into 2 4, 5 by 2 is nothing but 10 by 4. Okay, so where is 10 by 4 now? 10th dot on the right side of the 0. Okay, here denominator 4. Why denominator is 4? Because the unit distance is divided into 4 equal parts, so denominator is 4. Okay, now 10th dot on the right side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 by 4. So point D represents number 10 by 4. 10 by 4 means 5 by 2. So this statement 5 by 2 means 10 by 4 represented by point D, okay, is true. Okay, so here is our first exercise, practice set 1.1. So points to remember. Number 1, every positive number is greater than every negative number. Okay, now every positive number is greater than every negative number. So consider example 5 by 2. 5 by 2 is a positive number. Minus 7 by 8 is negative number, and 5 by 2 is greater than minus 7 by 8. Every positive number is greater than every negative number. Point number 2, so example number 2, 7 and minus 9 by 22. Okay, 7 is a positive number, minus 9 by 22 is a negative number, and every positive number is greater than every negative number. So therefore 7 is greater than minus 9 by 22. Second point, every positive number is greater than 0. 9 by 4 is a positive number and 0. So 9 by 4 is greater than 0. Every positive number is greater than 0. Second example, 11 by 7 is a positive number. So therefore 11 by 7 is greater than 0. Every positive number is greater than 0. 0 is greater than every negative number. 0 is greater than every negative number. Okay, so 0 and minus 4 by 11. So minus 4 by 11 is negative number. So therefore 0 is greater than minus 4 by 11. Second example, minus 7 by 5 and 0. So minus 7 by 5 is a negative number. So it is less than 0. 0 is greater than every negative number. Point number 4, when denominators are same, then the number with greater numerator is greater. When the denominators are same, then the number with greater numerator is greater. Consider example 9 by 4 and 5 by 4. Denominators are same, 4, 4. So the number with greater numerator is greater. So 9 and 5, which one is greater? 9 is greater. So therefore 9 by 4 is greater than 5 by 4. If you consider second example, minus 11 by 7 and minus 13 by 7. So here again denominator same, that is 7. Okay, now numerator minus 11 and minus 13, which one is greater, minus 11 or minus 13? So we know minus 11 is greater than minus 13. So therefore minus 11 by 7 is greater than minus 13 by 7. Okay, clear? So when denominators are same, then the number with greater numerator is greater. Now, comparison by equalizing the denominators. Okay, comparison by equalizing the denominators. Okay. So consider the example, compare the numbers 2 by 3 and 1 by 5. How to compare these two numbers, 2 by 3 and 1 by 5? Which one is greater and which one is small? 2 by 3 or 1 by 5? So method is equalizing the denominators. हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल करेंगे, दैट इज द इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स. ओके, सो फर्स्ट 2 by 3, we know 2 by 3 can be written as 2 into 5 3 into 5, that is 10 upon 15. 2 by 5 upon 3 by 2 into 5 upon 3 into 5, that is 10 upon 15. 2 by 3 can be written as 10 upon 15. And 1 by 5 can be written as 1 into 3
अपॉन 5 into 3 दैट इज 5/15। ठीक है, आपको पता है कि 1/5 जो है, किसी भी नंबर को अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो वो रैशनल नंबर जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 1/5 है, इसको हमने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, दैट इज 3/15 एंड 1/5 आर सेम। ओके, सो 1/5 कैन बी रिटन एज 1 into 3 upon 5 into 3, that is 5/15. Okay, now denominators are same, 15, and we know the point, when denominators are same then the number with greater numerator is greater. So here 15, denominators are same, so which one is greater, 10 or 5? So 10, and therefore we can say that 10/15 means 2/3 is greater than 1/5. 5/15 means 1/5. So 2/3 is greater than 1/5. Okay, so comparison by equalizing the denominators. Now consider second example. Compare the numbers -2/7 and -3/5. -2/7 and -3/5. Again denominators are not same. Okay, so we make it same. So -2/7. So what is the LCM of 7 and 5? LCM of 7 and 5, we know LCM of 7 and 5 is the 35. Okay, so we make denominator same, that is 35. So -2/7 can be written as -2 into 5 upon 7 into 5. Okay, so -2/7 can be written as -2/5 upon 7 into 5, -10/35. यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, एक 7 है दूसरा 5 है और हमको वो सेम करना है। सो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 and 5. यू नो एलसीएम ऑफ 7 and 5 हमने पिछली क्लासेस में देखा है। एलसीएम ऑफ 7 and 5 कैसे निकालते हैं? सो 7 1 × 7, 7 के टेबल में 5 आता नहीं तो 5 एज इट इज, फिर से 5 1 × 5. सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 7 and 5? एलसीएम of 7 and 5 is equal to 7 into 5, that is 35. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 35. Okay, now we make denominator 35. So for this purpose -2/7, so denominator हमको 35 करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So -2 into 5 upon 7 into 5, that is -10/30, 35. सिमिलरली -3/5, इसका भी डिनोमिनेटर हमको 35 करना है. सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. सो इट कैन बी रिटन एज -3 into 7 upon 5 into 7, that is -21/35. Now denominators are same, 35. We know the rule, when denominators are same then the number with greater numerator is greater. Now compare -10 and -21, which one is greater? So we know -10 is greater than -21. So therefore we can say that -10/35 means -2/7 is greater than -3/5. Now second, comparison by rule method. ठीक है, हमने जो पहला देखा था कंपैरिजन बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपैरिजन बाय रूल मेथड. नाउ व्हाट इज रूल? If a/b and c/d are two rational numbers such that b and d are positive, very important, b and d are positive means denominators must be positive. Okay, अगर हमको रूल मेथड अगर यूज करना है तो एक बात आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर्स जो है वो पॉजिटिव ही होने चाहिए. अगर नहीं होंगे तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 2/7 है तो हम इसको -2/7 लिख सकते हैं. ओके, सो b and d means denominators must be positive. Okay, now what is first rule? If a into d is greater than b into c, then a/b is greater than c/d. If a into d is greater than b into c, then a/b is greater than c/d. Okay, means we first find a into d. We first find a into d, and we second find b into c.
So if A into D is greater than B into C, then first number is greater, means A upon B is greater than C upon D. Second, if A into D is less than B into C, then A upon B is less than C upon D. And third, if A into D is equal to B into C, हमने A into D किया, फिर B into C किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने पहले किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया. If both are equal, A into D is equal to B into C, then we can say that the two numbers are equal. A upon B is equal to C upon D. Now consider example. Compare the numbers 2 by 3 and 1 by 5. Compare the numbers 2 by 3 and 1 by 5. Now we compare by rule method. Okay. So we know first number is A upon B. So let A upon B is equal to 2 by 3, and second number is C upon D. So what is rule? First we find A into D. A into D. Here A 2, D 5. So 2 into 5 10. B into C. Here B is 3, C is 1. So 3 into 1 3. Now what is rule? If A into D and is greater than B into C, here A into D means 10, which is greater than B into C means 3. So first number is greater. First number is 2 by 3. Okay. So A into D 2 into 5 10. B into C 3 into 1 3. Now 10 is greater than 3. 10 is greater than 3 means A into D is greater than B into C. और हमको पता है A into D अगर greater होगा means first number is greater than second number, that is 2 by 3 is greater than 1 upon 5. Let us consider, okay, practice set 1.2. Okay, now practice set 1.2. Compare the following. Compare the following numbers. Practice set 1.2, page number 3. Page number 3. Compare the following numbers. Number 1, minus 7 minus 2. Minus 7 minus 2. Okay, minus 7 minus 2. So simple. Here 7 is greater than 2. आपको पता है अगर कोई भी नंबर अगर ग्रेटर होगा, कंसीडर करो 7 is greater than 2. We know 7 is greater than 2. तो इसका जो अपोजिट, इसका जो निगेटिव है वो लेस देन हो जाता है. मीन्स माइनस 7 इज लेस देन माइनस 2. ग्रेटर द नंबर लेसर इज इट्स अपोजिट. ओके, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर होगा मीन्स A इज ग्रेटर देन B. सो वी नो माइनस A इज लेस देन माइनस B. अगर A और B में अगर A ग्रेटर है तो जब हम उसके निगेटिव लेते हैं तो इक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 2. सो देयरफॉर अगर मैंने निगेटिव लिया माइनस 7 और माइनस 2 तो इक्वालिटी चेंज होंगी. ओके, इनइक्वालिटी क्या होंगी? चेंज होंगी. सो माइनस 7 इज लेस देन माइनस 2. ओके, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएंगे. सेकंड एग्जांपल जो है 0 minus 9 by 5. 0 minus 9 by 5. तो वी नो कंपैरिजन 0 is greater than every negative number. So minus 9 by 5 is a negative number. So 0 is greater than minus 9 by 5. Since 0 is greater than every negative number, so therefore 0 is greater than minus 9 upon 5. Example number 3. 8 by 7, 0. Again we know the rule. Every positive number is greater than 0. So therefore, since every positive number is greater than 0, so therefore we can say that 8 by 7 is greater than 0. Fourth example, minus 5 by 4, 1 by 4. Minus 5 by 4, 1 by 4. We know every negative number is less than every positive number. So minus 5 by 4 is a negative number. 1 by 4 is a positive number. So minus 5 by 4 is less than 1 by 4. Okay, since every negative number is less than every positive number. Fifth example, 40 by 29, 141 by 29. Okay, so again we know the rule.
व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 29 29, देन द नंबर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. ओके, सो 40 और 141 में 141 ग्रेटर है. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट 40/29 इज लेस देन 141/29. यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो नंबर ग्रेटर. तो किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है यहाँ पे? 141 इज ग्रेटर देन 40. So therefore 40/29 is less than 141/29. Sixth example, -17/20 and -13/20. Same example, denominators are same, the number with greater numerator is greater. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर क्या करेंगे? -17 -13. So -13 is greater. So therefore we can say that -17/20 is less than -13/20. -17/20 is less than -13/20. Seventh example, 15/12, 7/16. So we know 15/12 can be written as, or 15/12 इसका लोएस्ट फॉर्म करके भी हम कर सकते हैं, और अगर हम रूल मेथड से करेंगे, यहाँ पे हम रूल मेथड से करने जा रहे हैं. सो वी नो डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो वी हैव टू मेथड्स, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर एंड रूल मेथड. हियर वी यूज रूल मेथड. सो व्हाट इज रूल मेथड? फर्स्ट नंबर इज a/b, फर्स्ट नंबर इज a/b, सेकंड नंबर इज c/d. नाउ फर्स्ट वी फाइंड a इंटू डी. यहाँ पे a इंटू डी कितना होगा? a देखो 15 है, d 16 है, सो 15 इंटू 16 अगर करोगे तो 240 आ जाएंगे. नाउ b इंटू सी, b इंटू सी, b इज 12, c इज 7, सो 12 इंटू 7 84, b इंटू सी अगर करोगे तो 84 आएगा. व्हाट इज रूल? इफ a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी. यहाँ पे 240 जो है वो 84 से ग्रेटर है. 240 is greater than 84. So means a into d is greater than b into c. First number is greater. So 15/12 is greater than 7/16. रूल मेथड बहुत इजी है. फर्स्ट हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू डी. सेकेंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू सी, 12 इंटू 7. ओके, सो a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी. सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. Eighth example, -25/8 and -9/4. फिर से यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये एग्जांपल हम इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर मेथड से करेंगे. मीन्स इन दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है. ओके, सो -25/8 एंड -9/4, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो हम इसको 8 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. सो -9/4 कैन बी रिटन एज -9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2, -18/8. क्या किया हमने यहाँ पे? 8 वैसे ही रखा, -25/8, और हम 4 को 8 कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2. सो -9/4 को हमने ऐसे लिखा है, -9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2. अब इसका डिनोमिनेटर 8 हो गया, सो -18/8. ओके, नाउ -25/8 is less than -18/8. Why? We know denominators are same, 8. तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो नंबर ग्रेटर है. सो -25 एंड -18, we know -25 is less than -18. So therefore -25/8 is less than -18/8, and -18/8 is nothing but -9/4. -18/8 को ही हम कैसे लिख सकते हैं? देखो -18/8 है, इसको -9/4 लिख सकते हैं. So -25/8 is less than -9/4. Okay, ninth example, 12/15, 3/5. So we know 12/15. What is the lowest form of 12/15? अगर 12/15 है, so 12/15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 4s are 12, 3 5s are 15, 4/5. So 12/15 can be written as 4/5. एंड सेकंड नंबर इज 3/5. फिर से इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है अभी, एंड वी नो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5. वाई? डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो नंबर ग्रेटर.
इसका मतलब 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5. So therefore we can say that 4/5 is nothing but 12/15. तो ये जो 12/15 है ये ग्रेटर होगा 3/5. इसी को अगर हम रूल मेथड से करेंगे, इसी एग्जांपल को अगर हम रूल मेथड से करेंगे तो वो भी सिंपल है. देखो फर्स्ट वी फाइंड a इंटू डी मतलब 12 इंटू 5 a इंटू डी दैट इज 60. सेकंड b इंटू c मतलब 15 इंटू 3 दैट इज 45. So first is 60, second is 45. Which one is greater? First means first number is greater. So 12/15 is greater than 3/5. Okay. And last example is -7/11 -3/4. Again ये जो एग्जाम्पल है हम रूल मेथड से करेंगे वही इजी जाएगा. ठीक है. तो देखो क्या करेंगे हम. सबसे पहले फर्स्ट नंबर इज a/b, सेकंड नंबर इज c/d. तो फर्स्ट हम a इंटू डी फाइंड करेंगे मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 and 4 का. ठीक है. सो a इंटू डी -7 इंटू 4 -28. सेकेंड वी फाइंड b इंटू सी 11 इंटू -3 -33. नाउ कंपेयर -28 एंड -33. सो वी नो -28 इज ग्रेटर देन -33 मीन्स a इंटू डी जो है वो ग्रेटर है b इंटू सी से. तो फर्स्ट नंबर a इंटू डी अगर ग्रेटर होगा मतलब फर्स्ट नंबर ग्रेटर है. -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2.